Hey everyone, good morning. Welcome to a new day in Chitkul. So as मैंने आपको कहा था अब मैं जाऊंगा यहाँ से आगे चितकुल से देखने कहाँ तक जा सकते हैं सिविलियंस. तो चलो चलते हैं. I'm here at the last point ahead of Chitkul. This is the ITBP post on the other side of the camera, which I'll not be able to show to you out of respect for the armed forces rules. So ये exactly last point है जहाँ तक आप आ सकते हो without permission. Permission के साथ आप आगे जा सकते हो with and permission शायद से DC या DP किसी की चाहिए होती है, I don't know. And look at the landscape here, it's amazing. यहाँ पे बसपा रिवर है, वही जो चितकुल में बहती है. And all the snow-capped peaks are here. The roads are up till here are, you know, the roads up till here are meant for all types of vehicles. They are not the ideal, neither the smoothest, but you can come till here in any vehicle of your choice. Alright everyone, now after spending 3 days at Chitkul, it's time to move from here. Plan था कल्पा का, but now I think I'll be heading to Nako. कल्पा वापस आते हुए रुक जाऊँगा. So let's move.
after a lot of time on this beautiful road journey from Chitkul onwards till here, I'm at Pooh for having something to eat. There's cafe 1082 here. थोड़ी बहुत चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे आपको. ब्रेड नहीं मिलेगा. मैगी, समोसा, चाय. And I'll suggest that if you are here, you eat something of this sort if you are hungry, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ और खाने को मिलेगा नहीं. नीचे बह रही है सतलुज नदी and this place is surrounded by white peaks and rocky terrain mountains. So Nako is around 37 to 38 kilometers from here. तो वहाँ पे जाने में लगेगा अभी 1 से 1.5 घंटे के बीच में. तो चलो खा के वहाँ चलते हैं अब. guys, I am here at Nako. गाड़ी वहाँ खड़ी है. This is Rikpa Homestay. यहाँ पे परमा नेगी जी हैं. A very hospitable person and he is very warm. रूम जो है उसका टोल मैं आपको दूंगा सुबह, क्योंकि अभी लाइट नहीं है यहाँ पे और कुछ दिखेगा नहीं. हवा चल रही है बहुत ठंडी. तो यहाँ के नज़ारे देख लो वैसे. और this room that I am going to show you later in the video and for me tomorrow, that costs 800 rupees per person. Negi ji was very kind and he gave me a 3-person room, even though we are just 2 people. So a big thank you to him. And अब देखो नज़ारे यहाँ कैसे हैं. सुबह यहाँ से जाऊँगा आगे नाको
लेक पे अंधेरे में आने में मज़ा नहीं आएगा। तो चलो हम नज़ारे एंजॉय करते थोड़े।